Hello student, this is video number 6 ongoing chapter class 10th history nationalism in India. Now today's topic is 3.2 how participants saw the movement. Nationalism in India we have discussed two lots of the Mahatma Gandhi and their contribution to the national freedom struggle in India. Now जो पार्टिसिपेंट्स थे बेटा जो उसके अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को हमने डिस्कस किया तो उसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेट थे उन्होंने उसको कैसे देखा लुक दे सॉ द मूवमेंट्स सो लेट अस न्यू लुक at the different social groups that participated of the civil disobedience movement. So why did they join the movement and what were their ideals and what did स्वराज mean to them. अब देखिए जो लोग थे जो उससे जुड़े जो पब्लिक थी जो कॉमन पीपल्स थे उनके लिए क्या इसका मीनिंग था ये क्यों उसके लिए उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे व्हाट वर देयर आइडियाज़ उनके क्या आइडियाज़ थे और स्वराज का जो मीनिंग है वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा. सो इन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो इन द कंट्री आर साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. अब देखिए यहाँ पे दो कम्युनिटीज़ के नाम दे रखे. पाटीदार्स ये बेटा रिच पीजेंट थे जो अमीर किसान थे जो कम्युनिटी बनी हुई थी किसानों की वो थे पाटीदार्स. ये थे गुजरात के और जाट्स थे उत्तर प्रदेश के. वर एक्टिव इन द मोमेंट बीइंग द प्रोड्यूसर्स ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स. अब ये बिकॉज यहाँ दोनों जगह के ये जो लोग थे ये उसमें इन्वॉल्व थे और एक्टिवली इन्वॉल्व थे बिकॉज जो इनका एरिया था जहाँ पे क्रॉप्स होती थी वहाँ कमर्शियल क्रॉप्स होती थी और कमर्शियल क्रॉप्स से इनको क्या है कि जब उसको सेल आउट करते थे तो इनको पैसे अच्छे मिलते थे. ठीक है. So they were very hard hit by the trade disruptions and the falling price as their cash income spread and they found to impossible to pay the government revenue demands. So and the refuse to the government to reduce the revenue demand led to the widespread restatement. So the rich peasant became the enthusiastic supporter of the civil disobedience movement, organizing their communities and the times of the forcing regulates members in the participate in the boycott program. For them the fight for the Swaraj was the struggles against the high revenue, but they were the deeply disappointed where the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. So when the movement was restarted in 1932 many of them refused to the participate. अब देखिए जो पाटीदार लोग थे जो जाट लोग थे जब यहाँ पे भी जो इकोनॉमिक डिप्रेशंस आया था जब मंदी आया था और ट्रेड भी उनका अच्छा नहीं चल रहा था तो वो अपना जो रेवेन्यू था वो टाइम पे नहीं दे पा रहे थे. बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि सिविल डिसोबीडियंस को कॉल ऑफ करना पड़ा 1931 में और बिना किसी रेवेन्यू जो उनका डिमांड था उसको कम किए गए. उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ था उनको भी रिवाइज नहीं किया गया था रेवेन्यू रेट्स को. बट जब वापस ये 1932 के अंदर वापस जब स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रिफ्यूज़ किया. सो द पुअर पीजेंट्री was not just interested to the lowering of the revenue demand. Many of them to the small tenants, cultivators land they had the retained from the landlords. As the depression continued and the cash incomes divined by the small tenants found in the difficulties to pay their rent. So they wanted to the unpaid rent to the landlords to the remitted and they joined the varieties of the radicals movements. Often they laud the socialists and the communists. Apprehensive the rising the issues that might upset the rich peasant landowners and the Congress was the unwilling the supports no red campaigning the most places. So the relationship between the poor peasant and the Congress remained uncertain. So and what about the business classes and how did they relate to the civil disobedience movement? So during the First World War in 1914 to 1948 the Indian merchant and industrialist made huge profit and become the powerfuls. We look in also the chapter number 5 in the expanding their business they now react against the colonialism policies and the restrict the business activities. So they wanted the protection against the imports of the foreign goods and the rupees sterling foreign exchange ratios that would be discourage the imports. So the organized business interested and they formed the Indian Industrial and the Commercial Congress in 1922. The federations of the Indian Chambers of the Commerce and the Industries with the full name of FICCI in 1927 they set up by and led by the